comma, hyphen, see the comma has been appeared in the sheets. Just drag it down. You can see the comma has been created. Similarly, you can add abc at the rate whatever yo dot c. Just drag it down. See, the comma has been created in the sheets. Again, I'm doing equal to sign, click, press equal to sign, put the equal to sign here, select the data and key which is 7 in your keyboard, colon, comma, again and comma, hit enter, OK. See the changes. Drag it down to change all the seats. See, the comma has been appeared in all the seats. So यहाँ से आप इजिली आप कॉपी करके वहां पे पेस्ट कर सकते हैं मेल करने के लिए. ये मेलिंग फंक्शन था, क्योंकि आपके पास अगर किसी बंदे ने आईडी भेजा है तो आपका आईडी इस फॉर्मेट में दिखेगा जो मैंने ईमेल आईडी के नीचे लिखा है. लेकिन आप जब कॉपी करके आप वहां पे डालेंगे मेल में तो वो काम नहीं करेगा जब तक कि आपका कॉमा नहीं दिया रहेगा लास्ट में. तो कॉमा लाने के लिए सारे शीट्स में सपोज वी हैव having 100 of email ID and we send to the mails for, so we can add the comma in the end of this email ID. You can select equal to button over the email ID, put and comma, per comma and comma again, per comma and again comma. You can just click enter for that and OK, and drag it down or double click on the right box of the shell. See, comma has been created. So I am going to delete this, the comma functions. This is the format. Now moving to the result options. The results, moving toward the result sheets. We completed the name filter. Now moving to the result sheets. You can see the student's name and according to their roll numbers, and there is the mark sheets of students according to their numbers, marks obtained, total marks and grade, fail and pass. If grade 35 above, if marks 35 above, grade will be A, or under 350 the grade will be B. So सबसे पहले तो आपको डेटा आपको ये क्रिएट करना होगा, क्योंकि ये बना बनाया मिलता नहीं. क्योंकि सब्जेक्ट तक डेटा आपने क्रिएट कर लिया, बच्चे ने कितना मार्क्स लाया है उसको आप मैन्युअली फिल करेंगे. मार्क्स ऑब्टेन्ड, जब मैं डिलीट करता हूं इसको, फिर कैलकुलेटिंग द मार्क्स,
just click that, equal to sign, or you can select the marks by mouse, or you can put sum this all the data and bracket close the bracket, hit enter. See, total marks has been calculated. Double click on that right button, you can see that जितने भी सारे लोग के मार्क्स थे टोटल सारे कैलकुलेट हो गए एक ही क्लिक में। सिर्फ हम लोगों ने फॉर्मूला एक पे डाला है, सारे कैलकुलेशन सीट पे हो गए ऑटोमेटिक। कंट्रोल जेड, आई एम गोइंग टू शो अगेन, जस्ट क्लिक auto sum, you can select this sheet, go to auto sum in home ribbon, just click on that simple auto sum. See, it will create it, or you can add with functions key or formula key by pressing equal to button. Just click the cell, select the all cells. First of all, you have to write sum. What you want to do is adding all the cell. Just click equal to button, sign, type sum, SUM, bracket open, select all the sheet, bracket close, hit enter. Now drag it down. See, the total marks is created, and here is total marks. This is the marks obtained by students, and this is the total marks of each subject. For all subjects 500 marks. There are 5 subjects: English, Hindi, Math, Science and Studies. Total marks is 500, and this is the grade A and B. I'm using only 2 grades here, A and B, and pass and fail. If someone has grade A, it will be pass, or if B, he or she failed. अगर किसी का B है तो वो फेल है। यहाँ पे ऑलरेडी हमने फॉर्मूला पुट किया है, तो ऑलरेडी यहाँ पे शो कर रहा है ग्रेड ए को पास कर दिया इसने, ग्रेड बी वाले को फेल कर दिया। तो ये कैसे हुआ, पहले ग्रेड समझते हैं हम लोग। टोटल मार्क्स if 30, this is the formula. Now I am writing this formula. Grade A and grade B. Select and delete the data first. We are using if function here. First of all, we click equal to sign here. He put equal to sign here. Write if tab button, or you can use Control A for dialog box. This is the logical test for if formula. Select the desired options, marks obtained. If this is greater than 350, comma,
a colon grade A, or if under 350 it's grade B. C. Grade A and grade B is appear according to their marks. Okay guys, I'm again doing it by deleting these cells. Just select the cells equal to sign if control A, or you can click the type button, or you can use control A for dialog box. It is easy to understand. If you have dialog box, just click control A after writing if. So if the logical test is 349 is greater than 350, comma grade B, grade A, or comma grade B, sorry, greater than 350, grade A, comma grade B, comma C. Only three candidates has obtaining grade A. Rest of them are in grade B, which is fail. 384 is greater than 350, 349, 368 is greater than 350, 384 is greater than 350. So grade A will be displayed under the column. Now this is the grading system. If you want to add the percentage, just click that. You can add this percentage column. You can add it by clicking right click, insert column, just right click, insert column, it will be created. Or you want to delete, just control Z for deleting, or you can select control right click by the mouse, you can delete the cell. See, now I'm creating the cell for percentage. Just insert the cell. After total marks, right click percentage. Now if you have strong backgrounds in maths, you can easily understand the logic of percentage. It's a basic of maths, as you say. So अगर आपको मैथ्स आती है तो आप परसेंटेज समझ जाएंगे कि कैसे कैलकुलेट होता है. हम लोग कॉपी में कैसे कैलकुलेट करते हैं परसेंटेज को. तो क्लिक ऑन द सेल, टाइप इक्वल टू साइन. This is the options which we're gonna calculate the percentage. Divided sign by total marks 500, which is 500, multiply sign, which is shift key plus 8 on your keyboard,
This is the asterisk, you can say multiply marks, which is multiply by 100. Click enter. See, 69.8% he got. Just drag it down the cells to the bottom. See the changes. All are in percentage form. सारे परसेंटेज आ गए. 70% जिसका था वो पास है. पास, I mean to say grade A pass. You can use the several commands for grade different grades for marks as you desired. I am here putting the only two grades, A and B, and the pass and fail, just for understanding the topic. Just select the key. Again, I am showing your percentage. Just select the C equal to sign. Marks obtained, first marks obtained divided by total marks, multiply by 100. Hit enter. 69.8%. Drag it down. See, the percentage has been created to all the students according to their numbers. Grade A and grade B, we already understand. Now moving to the pass and fail. Similarly, grade system, we calculated, you find the fail and pass, just delete the cell. Delete the cell. Select this column first, put equal to sign, if function, also apply here if function, if function. You can, after if, you can click tab button in your keyboard, or you want to dialog box for that, you can just type if button and control A for dialog box. See, the dialog box has been shown. So in the logical test, marks obtained, we can use marks obtained here, or you can use grade A and B also. Now I'm using marks obtained for that. So J3 is greater than 350, comma, upper comma, grade if pass, or comma if lesser than, just put fail. See, drag it down. जिसके भी नंबर 350 से ज्यादा थे वो पास हो गए, और जिसके 350 से कम थे वो फेल हो गए. मतलब अकॉर्डिंग टू देयर डेटा. हमने यहाँ पे सिर्फ दो फंक्शंस को यूज किया है. सिमिलरली यू कैन यूज द सेवरल ऑप्शंस फॉर देयर if functions. Now we want to select the data conditional format. आप लोगों ने पहले भी बताया, आपको अगर आपको हाईलाइट करना है सिर्फ फेल को और ग्रेड ए को, टेक्स्ट टू कॉलम, टेक्स्ट दैट कंटेन्स, you can write grade B for red highlight. Okay. See, जितने भी ग्रेड बी वाले हैं सारे को हाईलाइट कर दिया इसने कलर से, which is fail. Similarly, we have to change the C by selecting the data first. Go to home ribbon tab. You can see here the option conditional formatting. Click this highlighted cells. Go to text that contains. You can type manually. If you want to color the pass students, just click pass, change the color,
because we already select the color for fail students with light red, fill with dark red. Now you can use the color if you want to use. So green color we use for pass students, or you can manually change the color from custom formatting. You can see the custom formatting. There is the various options for manually change the color for formatting the data. Now I am selecting the data which is here green fill, which for pass student. Just click this. You can see 3 students has got grade A and pass. जितने भी पास स्टूडेंट थे सारे को इसने ग्रीन कलर से शो किया है, और जितने भी फेल स्टूडेंट थे सारे को इसने रेड कलर से शो किया है. It is nothing but the formula using if command for system, grade and fail, or you can use it from any other data you want to filter or analyze your data according to your needs or data first. So this is the result, and we want to know the percentage and the grade and pass and fail for using if functions. You want to highlight the pass and fail, just click on that. Again we are showing so conditional formatting, highlight cells, text that contains. You can select manually type grade A or grade B for giving their specific color. Okay. This is the add function. You can add total marks if you want to add here. Just total auto sum 350 is created. Font increase. Select the total marks here. From the bottom's blank cell, go to auto sum filter, or you can select average, maximum, minimum, more functions here. Day and date time, if functions, count functions. Now moving to the add functions. For this, total 350, 3,500. Students 7 into 5, 3,500. If you want to increase, suppose this is the shortcut key for multiplying the data. Suppose 25, 5. We want to subtract the data. Just equal to sign, put minus, select the data, hit enter. See, 20 is displayed. Or you can use the filter key for this, or formatting the cell. This is the 25 and 5 font size is 16, but the 20 is 11 size. You can select by right click format painter. See the format painter, what is going to do is just click. See, जो भी आपने select किया था डेटा को according to their, वैसा ही आपको यहाँ पे select करके डेटा आपको वो दे दिया. ये कैसे हुआ? फॉर्मेट पेंटर से. अगेन आई एम डिलीटिंग दिस सेल. अभी क्या है, 20 जो है 20 का साइज छोटा है और फॉन्ट को भी हम लोग चेंज कर देते हैं, ठीक है. लेकिन हम लोगों को चाहिए ये जो डेटा है 25 एंड 5 के साथ मतलब सिमिलर चाहिए, ये डेटा 20 भी सिमिलर रहे. तो हम लोग क्या करेंगे, एक प्रोसेस है वहां से जाकर चेंज करेंगे. अगर बहुत सारा डेटा वहां से जाकर चेंज करेंगे.
अगर आपको सेम डेटा यहाँ पे करना है, क्योंकि आपको मालूम नहीं ये कौन सा फॉर्म था और कितने साइज का है ये, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे ये चीज जिसको फॉर्मेट करना है, ये चीज को सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक, you can see the options of format painter, see the brush of format painter, click on that, just drag it, see the changes. जैसा कि 5 लिखा था, 25 and 5, 20 is also the same format in 16 pt font size, and the font theme will be Calibri. If you want to change this font, just go to Calibri, Algerian, change the color, change the font. You want to select, Control Z for undo. This is the format painter. Format painter. See, you want to XYZ company in one cell, just select the cell, wrap text or merge to center, merge across the cell. ये सारा सेल एक कॉलम में आ गया. अभी क्या था, जब तक मर्ज नहीं किया था, अनमर्ज सेल, सिर्फ एक कॉलम में, यहाँ पे आप देख सकते हो, बॉर्डर में डाल देता हूँ. ये क्या है, सिर्फ एक सेल में है, विच इज आई. You want to add the 2 columns, just select the columns first, go to merge center in home tab, drop down menu, merge across, just click on that, merge across. You can see the changes. एक सेल में ये सारा चेंज हो गया. Or you want to select, center it, align it, you can align. Or you want to unmerge the cell, you can just select the cell first and go to merge center again and unmerge the cell. See, and go to change the color, select the data, go to no color, see the changes. It is nothing but the merge and center command. ये कब काम आता है, जब आप कॉपी करते हैं कभी गूगल फॉर्म से कुछ भी, और एक्सेल सीट का फॉर्मेट रहता है, और यहाँ पे आप देखते हैं कि कोई चेंज नहीं हो पा रहा है, सारे सिलेक्ट है डेटा एक में, और you can't merge the cell, you can't edit the cell, just select the data and go to the unmerge cell command. सारे को अनमर्ज कर देगा, उसके बाद आप एडिट कर सकते हैं. किसी किसी डेटा में रैप टेक्स्ट भी रहता है, उसको अनटिक कर दे आप. अभी यहाँ पे रैप टेक्स्ट नहीं है. अनटिक करने के बाद यहाँ से अलाइनमेंट ले ले, उसके बाद सिलेक्ट कर ले. ओके, now I'm taking the questions answer session tomorrow because it's a sort of time. We are covering the topics first. You can write your questions. We will discuss this tomorrow itself. Okay, and the feedback form is going to share tomorrow. Today is not I will share the feedback form. So moving to the next topic, which is we covering the name filter, result,
working hours. Now moving to the third topic, which is working hour. We will covering in 30 minutes. See the data first. Now moving toward the working hours. It is basically used for the employees to the HR. From the HR, ये basically कंपनीज में यूज होता है ये डेटा to calculate the working hours, overtime and regular hours. Now I am going to zoom the page for better prospects, better viewing. The page you can see. Just turn your mobile into the vertical format so you can view it better. See the Monday, the day and time in lunch hour, lunch time in, lunch out time, time out, works, hours worked, regular time, overtime, and there is standard work day which is 8 hours, standard work week 40 hours, 8 hours into multiply by 5 hours, 5 days sorry, which is total 40 hours. Standard hourly rate 25 rupees, overtime hourly rate 37.5. Here's the total hours within the week, regular time, overtime. As we already created the total time here, and the pay total amount 1118.75 rupees. एक इंसान को ये इतने पैसे मिले, इतने वर्क में इतने टाइम उसने काम किया. कैसे कैलकुलेट हुआ इतना सारा? सिमिलरली अगर आपके पास 50 लोग हैं और वो लोग का डेटा आपके पास है, बट वो डेटा आपको ऑलरेडी, ये डेटा आपको यहाँ तक मिलेगा जहाँ तक मैंने सिलेक्ट किया है. यू हैव टू अकॉर्डिंग यू हैव टू ऐड दिस डेटा फर्स्ट from their login time or logout time. If you are a job holder, you can know the login and login time. So just moving forward, ये डेटा आपको पहले से ऑलरेडी मिलेगा क्योंकि वो ऑलरेडी पुट किया गया है सिस्टम में. तो 8 बजे इसका लॉगिन टाइम था, विच इज टाइम इन लॉगिन टाइम. लंच करने का टाइम मिला इसको 12:30 से 1 बजे तक, आधे घंटे का टाइम इसने लिया है. दूसरे दिन ट्यूसडे को इसने 1 घंटे का टाइम लिया है टाइम लंच में, एंड टाइम आउट जो है इसका 36:30 में है. वर्क आवर, एक दिन इसने कितना काम किया, एक दिन 9 hours. ट्यूसडे he or she worked for 9:30 hours. Wednesday, he or she worked for 9 hours. Thursday, similarly, he worked for 7.5 hours. And the Friday, which is the last day of the week, which she worked for 8 hours. How is calculated? It's a simple formula. I'm sharing formulas in PDF form tomorrow itself. Don't worry, but practice it all. Without practicing, you can't be familiar with Excel. अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको समझ आएगा, वरना मैं बता के यहाँ से निकल जाऊंगा, आप समझ नहीं पाएंगे.
प्रैक्टिस जब तक आप ना करें। मैंने वर्कशीट आपको शेयर कर दिया है, आपको प्रैक्टिस करना है। अगर इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम्स then you can mail us or ping me on WhatsApp. So here I am calculating the work hours. Just I am going to delete this work shell. First see, जैसे ही मैंने डिलीट किया सारे जो डेटा इससे रिलेटेड थे सारे 0 हो गए। क्यों हो गया? क्योंकि फॉर्मूला सबको लगा हुआ था एक साथ। फॉर्मूला में यही प्रॉब्लम है, अगर फॉर्मूला लगा है वहां से अटैच्ड है किसी भी मर्ज सेल में, तो आप अगर उस चीज को डिलीट करेंगे तो सारे चीज वहां से डिलीट हो जाएंगे शीट में। अंडू करने के बाद देखिए सारे डेटा यहाँ पे आ गए वापस से। फॉर्मूला को देखने के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे फॉर्मूला बार है। दिस इज कॉल्ड फॉर्मूला बार विच इज C3. C3 is time out minus time in bracket close plus E3 which is time out minus time in lunch time in bracket close hit enter. Okay, now I'm going to delete this. मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पे जस्ट पुट equal to marks first. In every formula you have to put equal to marks. Remember that, equal to marks. Without putting equal to marks, you can't be editing your data or putting your formulas in this cell. So click the equal to marks, bracket open, select first time out lunch which is 12.5. minus by time in which is 8 minus options minus which is time in, close the bracket, put the plus button here, plus sign here, open the bracket, time out minus time in lunch, close the bracket. This is the formula we put here. Click enter. See, 9 hours कैलकुलेटेड 9 hours. इसने एक दिन में कितना काम किया था? 9 घंटे इसने काम किया है। आप यहाँ से बाय डिफॉल्ट अपने हाथों से जोड़ सकते हैं, वरना आप देख लें यहाँ पे 9 hours। उसको आप ड्रैग करना है यहाँ तक। सी, जैसे ही आप ड्रैग करते हैं सारा कैलकुलेट कर देता है एक ही बार में। This is the function of Excel. It is also called magical functions. Control Z. Again I am showing you. Equal to button. Open the bracket. Lunch in time minus time in which is logging time. Close the bracket. Put plus button here, open the bracket, time out minus time in lunch. लंच से उसने वापस कब आया वो टाइम, close the bracket. See, whenever you open the bracket you have to close the bracket. जब भी आप ब्रैकेट देते हैं तो उसको क्लोज भी करना आपको मैंडेटरी है। Put enter. You can see by drag it down, all the calculated hours are displayed here. See the ease of calculating. If you are facing the time hours, just click on the format cells, go to the custom, select H-MM colon MM, sorry, custom in custom H which is H hour and minutes, select OK. See, if you find any problems in putting your works hour, I'm going to share basics
of day, if you want to write down weekday, just first put your week and drag it. See, automatically it will be filled with the day's name. आपने सिर्फ एक नाम लिखा, बाकी ड्रैग करने के बाद आपको सारा ये नाम आ गया. Similarly, you can click date, year 2020, month 01/20, close the bracket. See, the date has been created. You can change the format of cells. Go to right click, format cells. You can see there are several options here by formatting cells. Just select on that. See, Monday, January 20, 2020, the year. Control Z for that. This is the basic of putting day and time. If you want time, just put equal to sign time, tab button, hours, 1 hour, 12 minutes, second 0, close the bracket. See, 1 hour is calculated to AM. If you want to format this cell, click on the right cell. You can see there are several options here. You can use this H&M or you can use according to your needs. I'm moving forward fast so we can cover this by 12 o'clock. Okay. Again, I am covering this working hour because this is very basic or this is very advanced, you can say, which is calculated to works with numbers. Just click that. See, it's 1 and 12 minutes. Now going to the regular time. We calculate the working hours. Now this is the time for regular hour. See the formula. Whenever I click this shell, the formula has been displayed in the formula bar, which is if function F3 is 9 hours worked is greater than, which is standard work week, 40 work day, which is standard work day, which is 8 hours is greater than 9 hours is greater than 8 hours. अगर 9 घंटे अगर 8 घंटे से 9 घंटे अगर 8 घंटे से ज्यादा है तो यहाँ पे कैलकुलेट करके वो शो करेगा कितना घंटा अपने काम किया है. If function F3, which is hours worked, K1, which is standard work day, which is K, column K, row in word, this is one row, this is the column, ABC is a column, guys, and 1, 2 is a row. K1, again this is standard work day, and the F3, which is 0. Now I'm going to delete this cell. Just click on that cell, equal to button, if, Control A, if. Now if work hour greater than standard work, you have to freeze this cell for misguide or mismatch the data. You have to freeze this cell by pressing F4 command on your keyboard, which is F4. F4 is freezing command for data. Again I'm showing logical test, which is 9 hours greater than sign 8 hours, which is standard work day. Log this command, go to value if true, which is 8, log this cell. This is if value if false में आपको वर्क आवर्क डालना है, यहाँ पे ये पुट करें, उसके बाद ओके. सी 8 hours
जैसे ही आप डबल क्लिक करेंगे या ड्रैग करेंगे सारे कैलकुलेट अकॉर्डिंग टू द डेटा, इट ऑलरेडी कैलकुलेट फॉर यू। कैसे किया हमने फिर से मैं बता रहा हूं, यहाँ पे कंट्रोल Z करते हैं, इक्वल टू साइन इफ फॉर्मूला, कंट्रोल A for functions arguments. This is the dialog box of if formula. You can select first work hour greater than standard work day. Okay, then freeze the cell by pressing F4 command. If you have laptop, just click on that function plus F4, or you can click, if you have keyboard, just click F4 button for this freeze. फ्रीज करने से क्या होता है, डेटा को मिसमैच नहीं करेगा, ये लॉक हो गया है वो, ठीक है। वैल्यू इफ ट्रू में अगेन वी हैव टू टेक वर्क डे, ओके। नाउ also you have to freeze this cell. If false, we have to select work hour, which is 9. You don't have to select or freeze this cell, just click OK. Just drag it down. See the changes. सारे डेटा को इसने चेंज कर दिया, कैलकुलेट कर दिया रेगुलर वर्क पे। इसने काम एक दिन में 7.5 घंटा ही किया है। इसका टाइम, फर्स्ट वाले का टाइम थोड़ा इधर उधर था, लेकिन इसने कवर किया पूरा 8 घंटा रेगुलर वर्क। 8 घंटा मतलब इसने किया है रेगुलर। और ये क्या है, एक दिन में इसने काम किया था 9 घंटे, एक दिन इसने काम किया सिर्फ 7.5 घंटे, ठीक है। ओवर टाइम, यहाँ पे ये रेगुलर वर्क हो गया। ओवर टाइम में देख सकते हैं, जैसे क्लिक किया मैंने, ये फंक्शंस पहले लिखा है आगे। यू कैन राइट डाउन इट योर नोट बैक और डायरी ऑल्सो फॉर प्रैक्टिकल वर्क इन फ्यूचर। जैसे ही यहाँ पे क्लिक किया मैंने, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे फॉर्मूला बार में पुट हो गया। क्या लिया है मैंने, इफ फंक्शंस। यहाँ भी इफ इज वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शंस। इक्वल टू साइन इफ open bracket F3 which is 9 arc is greater than G3 which is regular arc, comma F3 minus G3 comma 0. Now I am going to show F3 greater than G3। फिर हम लोगों को F3 और G3 को माइनस करना है। पहले क्या करना है, F3 को, which is F3, which is column, and 3 is our row, which is 3, 9, column is F3 is row. This is we call F3. So here we can add, just click on that, delete first, or click equal to sign here. If logical test dialog box has been so here you can see F3 greater than G3. You don't have to freeze this cell, or if you want to just freeze this, comma minus 0. सी यहाँ पे क्या हुआ, हम लोग तीनों बॉक्स में, डायलॉग बॉक्स में हम लोगों को लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, एक ही बॉक्स में हम लोगों ने लिखा और यहाँ पे कैलकुलेट हो गया। क्योंकि ये ओवर टाइम का फंक्शन ही ऐसा है, आप अगर रेगुलर और वर्क आउट को कैलकुलेट कर रहे हैं तो यू हैव टू पुट ऑल द डेटा इन वन शेल, विच इज आई एम गोइंग टू शो यू अगेन। जस्ट select the data first, equal to sign if, control A, which is dialog box has been appeared. Logical test, you have to write F3 first, greater than regular work, comma now we have to minus this
कॉमा, इफ वैल्यू इज 0, दिस इज 0 आपको डालना जरूरी है। सी, by clicking this, overtime has been created. This is the overtime, awkward, regular work, overtime, and the total payout. This is the total. Now I'm going to delete this cell. See, work hour, मुझे ये वर्क आवर कैलकुलेट करना है। तो कैलकुलेट करने के लिए सिंपल ऑप्शन था, मैंने पहले बताया, सम फंक्शन का कैलकुलेट कर सकते हैं। ओपन द ब्रैकेट, सिलेक्ट द सेल, close the bracket, hit enter, 43 hours. But you find the problem here because I want to select the different data for your better understanding. Now I am going to select this. See, आप पहले अगर ये करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितना प्रॉब्लम आता है ये कैलकुलेशन में। फॉर्मेट, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट ये फॉर्मूला जो सिलेक्ट होता है वो कस्टमाइज रहता है एमएस एक्सेल की तरफ से कुछ और ही फॉर्मेट में, आपको वहां से चेंज करना होता है। यहाँ पे जैसे मैंने चेंज किया, मतलब मैंने कर लिया था वो पहले से आप लोगों के लिए, बट यहाँ पे फिर से मैंने यहाँ चेंज करके दिखाया। आप ऐसे ही कैलकुलेट कर सकते हैं। 9 into 3 27 ऑल्सो एंड प्लस 7 8 27, इट्स ऑलमोस्ट 35 आवर्स प्लस 35 आवर्स। यहाँ पे शो क्या कर रहा है, 19 आवर्स, ओनली 19। तो यहाँ पे कुछ गड़बड़ी है जरूर। ये दो ही दिन मिला के यहाँ 18 आवर्स हो जाता है इसका, बट यहाँ पे शो कर रहा है 19 आवर्स। तो यू कैन सिलेक्ट and change the format cell. Go to right click, just select format cells here. Here you can see the options HMM : HMM. This option, just type here square bracket, cover the H in square bracket, close the square bracket, hit enter. See, जितने भी आवर्स थे सारे कैलकुलेट हो गए। 43 आवर्स इसने काम किया है पूरे वीक में। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना था हम लोगों को, 24 आवर्स से कैलकुलेट करना था, मल्टीप्लाई करना था। ये डिलीट करते हैं। कैलकुलेट करते हैं 43 को into multiply, which is 8 numbers in your keyboard, multiply sign, by 24 hours. This is the 24 hours. Click enter. See, 43 hours, 43 in currency. We have to select this is in currency format. By default it's in dollar form. You can select, you can change your desired one. You can select this. I selected in the Hindi form, which is shine. आप लोगों को मालूम है ये साइन किसने बनाया था? हिंदी का हिंदी रुपीस का साइन हमारे गवर्नर ने, ये हमारे आरबीआई का गवर्नर ने पहले, हिंट आपके लिए है, रघुराम राजन ने नहीं बनाया, उसके बाद जो आए थे उसने बनाया बाय द टाइम ऑफ डिमोनेटाइजेशन। सो हिंदी आप सिलेक्ट कर लिया मैंने। यहाँ पे देख सकते हैं पहले डिफॉल्ट आता है डॉलर का साइन, बट वी आर इंडियंस, वी सिलेक्ट इनटू कन्वर्टेड इनटू रुपीस साइन, विच इज रा। This is the form of sum. Just select. Similarly, you can select, format this cell. ये रेगुलर टाइम ओवर टाइम को कैलकुलेट करना सेम वैसे ही सिलेक्ट करेंगे सम। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज,
देख सकते हैं आप, यहाँ भी वैसे ही करना है। सम ब्रैकेट क्लोज, हिट एंटर। ओवर टाइम में 3.5 घंटे ने इसने काम किया, रेगुलर में 39.30 वर्क आवर, 43 आवर्स। दिस द रुपीज कन्वर्टेड इनटू द, now I'm going to paste command. No, copy this cell, paste here. Now the formula has been changed, क्योंकि वहां पे फॉर्मूला लगा था। मतलब यही था कॉपी करने का। आप देख सकते हैं ये सारे कॉपी किया। जनरली क्या होता है, कॉपी करने के बाद सारे चेंज हो जाते हैं, एज इट इज कॉपी एंड पेस्ट होता है। बट क्या है, यहाँ पे चेंज हो गया। क्यों हो गया? फॉर्मूला लगा था यहाँ पे, इसलिए। जस्ट क्लिक ऑन दैट। यू हैव टू कैलकुलेट फर्स्ट रेगुलर वर्क and the which is overtime. G3, you can see the formula bar. In formula bar, sum of G3, which is 39 point, and G7. Okay, I'm going to delete this. No, I'm going to delete this pay. Sum, open the bracket, select this cell, see 41, 31 has already created, but this is not good. This is the mismatch of data, because I'm not putting this amount, which is standard workly rate or overtime hourly rate. So हम लोगों को यहाँ पे एडिट करने के लिए सिंपली यहाँ पे क्लिक करें, दिस फंक्शन मल्टीप्लाई बाय hourly rate which is regular work 24, click enter. No, G10 which is this and 24, G10 multiply by 25, hit enter. See, our rupees has been calculated according to the regular work hour. Similarly, it will calculate in this overtime also. You don't have to calculate this because we already select the cell. Just click on that. Overtime also you have to calculate overtime manually. Just click equal to button, select the cell total, which is total 330, multiply by 37.50, which is overtime. Because we are calculating the overtime, we have to select the overtime rate. Hit enter. It is wrongly written, so see the formula which is H10, which is this. Now going to, that's why we created this formula, this middle options for calculating the currency. Just click equal to button sign, H10 command row, multiply this cell by 37 overtime workly rate, hit enter. See, our money has been calculated. We calculated regular time as well as overtime work. Now we have to calculate this amount. How to calculate this amount? ये टोटल पे कैसे आएगा? इसका ओवर टाइम और रेगुलर टाइम मिलाकर ही टोटल आएगा ना। सिंपल लॉजिक है, इसलिए मैंने इस दोनों को पहले ऐड किया, रेगुलर और ओवर टाइम को. नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द टोटल पे अमाउंट विच इज गोइंग टू बी पेड to the employee. To equal to sign, put, select the cell, sum function, select this cell, close the bracket, hit enter. See, 1118.75 total pay amount
has been calculated. Okay, now it's going covering the topic. So if you have any doubts or queries, we will sort your queries or questions by tomorrow. Now we don't have so much time to cover the questions. We take the question and answer sessions tomorrow itself. You have to write your questions if you have any doubts or if you have any questions regarding these Excel sheets. So we are taking tomorrow. We are going to cover tomorrow its graph, company data, which is very important. By graph and company data, VLOOKUP format and the pivot table. VLOOKUP is very, very important, guys, so don't miss the class tomorrow. Now we did name filter, result, working hours. Now we are going to cover in the next session graph, company data, VLOOKUP. Okay, guys, so end of this session now. Question and answer will be taken tomorrow itself. If you have any question, then you write down your questions. I will answer your questions tomorrow one by one. And also we share the feedback form tomorrow. There is no feedback form today's. Now I am ending this session for today. Take care. Bye bye. We will meet tomorrow itself. Thank you to all of you. Have a good day. Bye bye. Take care. Now I am ending this session, ending this meeting. See you soon. See you tomorrow, guys. Thanks to all of you. Have a good day. Bye bye.